Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to e-learning class of chemistry. Dear students, as you know that we are doing unit number 1 and in the previous lecture we discussed the branches of chemistry. Today I will discuss some basic definitions and classification of matter with you. This topic is given at page number 6 of your textbook. So let's start with some basic definitions which are used frequently in chemistry. So the first and the most basic term is matter. How can we define matter? Matter is anything that has a mass and volume. हर ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास होता है मीन्स कोई ना कोई वजन होता है और वो एक ख़ास जगह घेरती है, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड मैटर. What is mass? The quantity of matter in an object is its mass. मास क्या चीज़ है? वजन. किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में जितना मैटर मौजूद है उसकी मिकदार को, उसकी क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड मास. और वी कैन ऑल्सो से मास इज द वेट ऑफ समथिंग, or we can say how heavy something is, so this is considered to be its mass. And what is volume? Volume is the space occupied by an object or any substance. वही बात कि हर वो सब्सटेंस जो कि ख़ास मास रखता है, एक ख़ास वज़न रखता है और एक ख़ास जगह घेरता है, that substance is known as matter. Everything around us is considered to be matter. In fact, the whole universe is made up of matter. And the study of matter is called chemistry. Another important term to be defined is substance. What is meant by a substance? A substance is defined as a piece of matter in pure form. हर ऐसे matter का कोई भी piece जो कि pure form में है, that piece of matter in its pure form is known as a substance. Now, what is pure form? Pure form means any form which is free from impurities. But there is also another definition of the pure form. Pure form means any substance that has the same composition and same properties throughout, that is also said to be pure form or a pure substance. Or we can also say that a substance that is made up of only one type of particles or one type of atoms or molecules or ions, so that substance is also considered to be pure. So pure form not only means that it is a substance which is free from impurities, but it also means that it is a kind of substance that has same composition, same properties, and also that is made up of only one type of particles, atoms, molecules, or ions. So a piece of matter in pure form is known as a substance. So these are some basic definitions about matter, mass, volume, and substance. Now next is the classification of matter. So as you can see in this sketch that there are two main classes of matter. This sketch is also given in your book at page number 6. So how many classes of matter are there? There are two main classes of matter. The first is represented as mixture, and the second is pure substance. Most of the matter which is present around us is in impure state, and the matter which is in impure state is known as mixture. तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जितना भी मैटर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है उस मैटर को हम मेनली टू क्लासेस में या टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. उसकी फर्स्ट टाइप है प्योर सब्सटेंस और सेकंड टाइप है मिक्सचर. अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड कि प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, जो ना सिर्फ इम्प्योरिटी से फ्री है बल्कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक तरह के एटम से, जो एक तरह के मॉलिक्यूल से या एक तरह के आयन से मिलकर बना है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस. And if you can see in this sketch, this pure substance is further divided into two main types. The first type is element and the second is compound.
Now look at the second class of matter. The second class of matter is known as mixture. Mixture is impure substance. And this is further divided into two main classes. The first is homogeneous mixture and the second is heterogeneous mixture. I'm going to define each of the kind of matter one by one. But before that, you have to keep in mind again that there are two main classes of matter. First, pure substance, in which we have to define element and compound. And the second class of the matter is mixture or impure substance, in which we also have to discuss the further two kinds, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So what is the first class? The first class is pure substance. Now you have to keep in mind the following 4 points about a pure substance. What kind of substance is considered to be pure? First point, a substance consisting of only one type of particles. Particles में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? Particles may be atoms, they may be molecules or they may be ions. तो हर ऐसा सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, हम उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं? That is a pure substance. We can also say a substance having definite composition and properties. Definite means खास. Composition means बनावट. Properties means उसकी खसूसियात. तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी बनावट, जिसकी खसूसियात जो हैं वो डेफिनेट हैं, that substance is also considered to be pure. Third point, a substance that cannot be separated into simpler substances by physical method. कि एक ऐसे सब्सटेंस को भी हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं कि जिसको हम किसी फिजिकल मेथड के जरिए सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एंड लास्ट पॉइंट इज every sample of the substance is identical to every other sample. यानी प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसकी कंपोजिशन आइडेंटिकल है, जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं उसके किसी और सैंपल से जो कि किसी दूसरी जगह से हासिल किया गया है. For example, if I talk about pure water is considered to be a substance. Why it is considered to be a substance? Because it has exactly the same composition and properties everywhere. यानी जो वाटर का सैंपल आप जिस जगह से लेते हो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स, यानी जहां से आपने वो वाटर सैंपल लिया है, हर जगह पे वाटर की कंपोजिशन सेम है. क्या कंपोजिशन है? वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. Properties will also be same everywhere. And same is true for gold, aluminium, copper, iron, salt, sugar, etc. So all these things are considered to be the pure substances because they are made up of only one type of particles. Among the pure substance, the first subtype is element. How we can define element? An element is a pure substance that is made up of only one type of atoms. वही बात repeated है कि element हमारे पास एक pure substance है. और क्यों हम इसको एक प्योर सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर. सबसे सिंपल टाइप है मैटर की और एक तरह के एटम से मिलकर कोई भी एलिमेंट बनता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा. इफ आई टॉक अबाउट कॉपर, द होल कॉपर इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स. द होल जिंक एलिमेंट इज मेड अप ऑफ जिंक एटम्स. So in short, we can say element is made up of only one type of atoms. And you also have to keep in mind that there are 118 elements which are found in our nature. And all of them have unique physical and chemical properties. Next is compound. A compound is also a pure substance. If you remember, हम pure substance में 2 classes या 2 subtypes पढ़ रहे हैं. First is element and the other is compound. So compound is also a pure substance and it is made up of 2 or more than 2 elements. Compound किस चीज से मिलकर बनता है? Elements से मिलकर बनता है. 2 या 2 से ज्यादा elements मिलते हैं और हमें क्या provide करते हैं? Compound.
एंड दीज एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो। यानी ऐसा नहीं है कि रफली कोई एलिमेंट्स मिक्सअप हो रहे हैं और हमें कंपाउंड्स बना के दे रहे हैं। नो, जब कभी भी कंपाउंड बनता है एलिमेंट से बनता है और हमेशा एलिमेंट्स की जो रेशियो है, जो अमाउंट है बाय मास, हमेशा वो एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट रेशियो ली जाती है और उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है और जिस वक्त वो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं दे प्रोवाइड अस कंपाउंड्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर वाटर, सॉल्ट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो चाहे हम एलिमेंट को डिस्कस करें या कंपाउंड को डिस्कस करें, बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड दे आर कंसिडर्ड टू बी प्योर सब्सटेंस। The second class of matter is known as mixture. What is mixture? First point, it is an impure substance. Pure substance की बात खत्म हो चुकी है, उसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड्स डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड कैटेगरी है मिक्सचर, वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। एंड हाउ वी कैन डिफाइन मिक्सचर? अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances. मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन करने से बनता है, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। बट डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में भी हम 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे थे, बट वहां पे उनका कॉम्बिनेशन केमिकली था। मिक्सचर जब बनता है तो जितने भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं उनमें किसी का कॉम्बिनेशन केमिकली नहीं होता, दे जस्ट फिजिकली कंबाइन टुगेदर and their components are not present in the fixed ratio. जैसे कंपाउंड में रेशियो उनकी फिक्स थी, मिक्सचर बनते हुए या मिक्सचर बनाते हुए किसी भी कंपोनेंट की रेशियो का फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जब कंबाइन किया जाता है फिजिकल तरीके से और उनके कंपोनेंट्स की कोई फिक्स्ड रेशियो हमारे पास मौजूद नहीं होती और हम उनके कंपोनेंट्स को आसानी से किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, सो दिस काइंड ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। एंड मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, द वर्ड होमो मीन्स सेम. So what is homogeneous mixture? A homogeneous mixture is one that has a uniform composition throughout. Uniform means same. Composition means बनावट, कि एक ऐसा मिक्सचर जो देखने में या जिसकी बनावट पूरी की पूरी एक जैसी हो, जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना फिजिकल मेथड से पॉसिबल है लेकिन हम उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अपेरेंटली। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, सेम है, जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इस किस्म के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. इफ वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, वी ऑल नो सॉल्ट कैन इजिली बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. बहुत आसानी से सॉल्ट वाटर में मिक्सअप हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद हम सॉल्ट के पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इस किस्म का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस किस्म के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ दिस मिक्सचर which is a mixture of salt and water, it has same composition throughout the mixture. But there is a method by means of which we can separate this mixture or the components of this mixture. And that physical method or that technique is known as evaporation. तो अगर हम इसी मिक्सचर को evaporate कर लें, water will evaporate and salt will left behind. The second type of the mixture is called heterogeneous mixture. Hetero means different. A heterogeneous mixture is one which does not have a uniform composition throughout. ये बिल्कुल फर्स्ट मिक्सचर की टाइप से ऑपोजिट है। वहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। वहां पे जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमने मिक्सचर में जितने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए होंगे उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली अपेरेंटली हम देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अगर हम वाटर में सैंड को ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, सैंड विल नेवर डिसॉल्व इन वाटर.
और अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख दें, थोड़ी देर के बाद सैंड के जितने पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर की लेयर हमें बाकायदा अलग से नजर आएगी. सो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, this kind of mixture is known as heterogeneous mixture. So what discussion we had up till now? We studied that matter is broadly divided into two main kinds. We have a pure substance and we have mixture. The pure substance is further divided into element and compound, and the mixture is also divided into two main subtypes: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So this was all about today's lecture. In the upcoming lectures, I will discuss element, compound, and mixture in further detail.